I'm your host Sonia Gupta and welcome to Anybody Can Bake. Every Friday I bring you a brand new 100% eggless baking recipe. If you have not subscribed to my channel yet, then subscribe it now and hit the bell icon. You will never miss my upcoming recipe videos. 100% eggless, 100% amazing. Everyone loves cookies just like you do. And if the cookies look different and they are quick to make, then who would not love to try them? तो आज हमारी रेसिपी कुछ ऐसी ही है। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफी बीन कुकीज विद ओसोरोस कोलंबियन कॉफी फ्लेवर। इन कुकीज का सिर्फ फ्लेवर ही नहीं बल्कि लुक भी कॉफी बीन्स जैसी है। तो हुई ना ये डिफरेंट? लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। टेक 50 ग्राम salted butter in a bowl. अब इसमें 50 ग्राम पाउडर्ड शुगर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये मिक्सचर फ्लफी और क्रीमी नहीं हो जाता। It can take about 2 to 3 minutes. I am using salted butter because I feel salted butter enhances the flavor. आप चाहें तो unsalted butter भी यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी सेम ही रहेगी। देखिए बटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। नाउ ऐड 80 ग्राम मैदा, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉफी सॉल्यूशन ऐड करेंगे। कॉफी सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून कॉफी पाउडर को 2 टेबलस्पून गर्म पानी में मिक्स कर लिया और मेरा कॉफी सॉल्यूशन तैयार है। Every recipe must have its own flavor and that makes it unique. Osoro is a premium food flavor brand developed in India and offer the best in taste experience. Osoro has an own range of flavors and once you try these, I bet you will never try any other brand. ओके, चलिए अब हम रेसिपी पर आ जाते हैं। क्योंकि ये कॉफी कुकीज हैं, तो कॉफी का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए आई हैव यूज्ड 1/2 टीस्पून ओसोरोस कोलंबियन कॉफी फ्लेवर। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका डो तैयार कर लेंगे। Now it's time to shape it. Divide the dough into 14 equal small portions. Roll each portion into a smooth ball. Take a baking tray, line it with parchment paper. एक डो बॉल लीजिए और इसे ओवल शेप में रोल करिए और नाइफ से इसके सेंटर में कट लगाएं। Place this on the tray. Similarly, shape all the cookies and arrange on baking tray by leaving some gap in between. Bake these cookies in preheated oven at 160 degrees Celsius for 15 minutes. हमारी cookies अब बेक हो गई हैं. See how beautiful these are looking. These are crunchy and wonderful to munch on. Thanks for watching. If you like this recipe, make sure to subscribe for more. Try this recipe and share your feedback. Start baking at home with Anybody Can Bake. See you next Friday with another exciting recipe video.